ठीक है. So from here we can import the data हाँ file, ठीक है import data, ठीक है। and we can import any file that we want. Since I have already used this, ओके। so you need to mention the year, the variables here, and the strings हाँ or the numeric. Numeric is the numerical value that the variable can take. So suppose y in this case is quantity of roses, x2 is price of roses, x3 is price of cartons, x4 is weekly income. So we need to find how the quantity of roses is dependent on these variables. Okay, this is the variable view, and accordingly we can go to data view where we have तो our imported तो data. भाई, तो ये जो नंबर्स है यहाँ पे, Hmm. दीज आर ऑल, तो तेरा डेटा है मतलब। Ah, this is the data. मतलब We can मतलब import. डिग्रेशन में डेटा चाहिए, कॉलम्स चाहिए, कॉलम्स है। क्या क्या क्या? मतलब डिग्रेशन का वेरिएबल्स है ना ये सब। हाँ, these are the variables. ठीक है. देख, ठीक what we can do is we can import the data. We'll get this, and accordingly we can define the variables like this, right? We ठीक है can label ठीक the है। variables as well. ओके Okay. ओके ओके। Now we have this data. We can analyze it as well. Regression, since we have done only linear regression, or starting with descriptive means, descriptive statistics. So for ठीक है suppose our dependent variable was quantity of roses, so we can find the mean, standard deviation, minimum, maximum range of, ओके। and various other things. सारे स्टेटिस्टिकल मेजर्स हम लोग को मिलेंगे। We can accordingly find the, and we have this data, right? So the quantity of ठीक roses is, in dozens is 12. The mean is 7645. Standard deviation and range accordingly. ठीक है। ठीक है. Now we can analyze it. We can do regression. So suppose our dependent variable is quantity of roses in dozen, right? ठीक है। And price of roses is our independent variable. Price of हम्म, carnations is our independent variable. Weekly income is ठीक है also independent. So we can run ठीक this है। regression. So before this, if we click on statistics, we can check what particular statistics we want. Coefficient, the value of ओके। coefficient, R, ANOVA table, confidence interval, बराबर। हाँ। and tolerance अच्छा inflation factor, which would suggest अच्छा, whether ये there is भाई ये क्या होता है वो, मल्टीकुलरिटी ना। particularity वाला, हाँ, whether it is present or not. ठीक है. तो we can continue it. ये VIF है क्या? ये VIF It है, is inversely वेरिएंस related इंटीजर to फैक्टर। VIF. अच्छा ठीक है। ठीक है. Now, हम्म, in the, if we select on save, we can have the residuals value saved as well. For this particular regression, we can save the residuals as well. And then we can check whether they follow the normal distribution or not. अच्छा वो भी सेव करना होगा ना, प्रिडिक्टेड हाँ, वैल्यूज। we can check that. So the thing is, यहाँ तक हो गया. ठीक है. Now हाँ if we हाँ select save and we select on हाँ residuals, so हाँ। the कंटिन्यू। residuals would be saved for this model, right? So these are the ओके residuals which are being saved for this particular model. And our result for the model is this. ओके। Okay. And we know how to अच्छा interpret. भाई, भाई एक बात है, ये तो ठीक है। अब जो रेसिडुअल सीरीज आया ना, वो हाँ, सीरीज को प्लॉट कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, हाँ, हाँ. So we will use the graph, हम्म histogram, and हम्म। the variable is residual 2, right? हाँ हाँ And ठीक we है। can use the display normal curve to check whether नॉर्मल कर्व। normal distribution or not. ठीक है। And we will get this result. So we can see, ओके ओके। okay, so we can have an idea about whether they follow a normal or not. ठीक है ठीक ठीक। And accordingly we can अच्छा भाई, वेरिएबल को लॉग ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, स्क्वायर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? we can transform the variables, compute. हम्म हम्म Suppose our target variable is weekly income. हम्म। Target variable is suppose वीकली इनकम। we can have a numeric expression
So suppose if you want to use log, लॉग। so you need to ओके है ना। हाँ वो write, लॉग ई ये भी है नीचे, नीचे yeah. ई भी है। So लॉग in 10 case लॉग ई। X4 was our weekly income before, हम्म। so we can have log, एक्स suppose फोर। LG base power 10 bracket हाँ X4. एक्स फोर। So this is how we'll get a new variable because we already have done this, so we already have it, right? अच्छा। ओके। ओके ठीक है। और क्या था भाई? ये तो लगभग हो गया बहुत कुछ। हाँ, इसमें बेसिकली वी हैड टू इंटरप्रेट वेरियस मॉडल्स, ट्रेंड को ऐड करके सिर्फ एनालाइज करना है, रिग्रेशन, लीनियर, एंड वी कैन, सो दिस इज लॉग वाई। तो ठीक है, हम्म। इफ यू वांट टू चेंज द हम्म। मॉडल हम्म। we can remove these variables, and हाँ suppose we हाँ। want to check log y, if log y is our dependent variable and log x2 is independent, x3 is independent, what would happen in this case? So accordingly we can use statistics, what all things we want, and whether we want to save the residuals or not, we can save if we want, and then so we will have the coefficients ओके are there and over table is there, we can interpret it. ठीक है And भाई। और वो भी तो कर सकते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? आ, आठ तो दे रहा है ना, आठ पर तो दे ही रहा है टेबल। हाँ, r square is there ओके ठीक है ठीक है। because sum of squares regression, so mean square is अच्छा also भाई there. वो जो R भाई square adjusts. एनोवा में होता है ना, एक स्टेटिस्टिक्स देते हैं ना कि ओवरऑल सिग्निफिकेंस कैसे चेक करते हैं पूरे मॉडल का। Overall significance F, एफ कहाँ पे दे रहा है? एफ यहाँ पे। F ANOVA log y में यहाँ, look at the cursor, cursor पे देख, F है, अच्छा। R square हाँ। भी है, adjusted R square भी है, अच्छा and for ठीक है। variables अच्छा typically एफ 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 इज हायर देन जीरो मींस द मॉडल इज सिग्निफिकेंट ना। if, एफ इज पॉजिटिव मींस द मॉडल इज सिग्निफिकेंट, राइट? नहीं नहीं नहीं, if t value is greater than 2, तो it would mean हम्म। that the variable is significant, or if the R भाई वो square तो is, है, वो हाँ, तो पता है मुझे। मैं बोल रहा हूँ कि एफ एफ F ओवरऑल का एफ F सिग्निफिकेंट का होता है। as such नहीं होता, because F is itself dependent on R square, वो फॉर्मूला होता है ना एक, हाँ हाँ, तो एज हाँ। सच वन आर वाला स्क्वायर बाई नहीं वन है, माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अपॉन के माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस आर स्क्वायर हाँ अपॉन एन माइनस के। ये फॉर्मूला। पर इससे हाँ तो एफ जुड़ता है ना आर स्क्वायर के साथ। हाँ, तो एफ मतलब बेसिकली आर स्क्वायर और एफ पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं, तो आर स्क्वायर कम है तो ओके। एफ वैल्यू वुड ऑल्सो बी स्मॉल। अच्छा। पर मैंने ये कहीं पे सुना था कि ओवरऑल सिग्निफिकेंस एफ वैल्यू से चेक करते हैं भाई। हाँ, ओवरऑल सिग्निफिकेंस मॉडल का एफ से करते हैं, बट एफ की ऐसे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती कि वन है तो हो जाएगा। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। ठीक है, और कुछ था? और कुछ था भाई? अभी इसमें तो इतना अ, ही था, बाकी वेरिएबल्स को ठीक है कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, यू कैन यूज द ट्रांसफॉर्मेशन, वो कंप्यूट, तो देख लिया। ठीक है, ठीक है ठीक एंड रिकोड इनटू सेम वेरिएबल मींस मतलब वो वेरिएबल रिप्लेस होके न्यू वेरिएबल उसमें ही आ जाएगा, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। तो सपोज इफ यू वांट टू, सपोज y was the quantity of roses in dozens, we can है। transform it, recode into the same variable. So if we use log y, if we transform into log transformation, this would become log y, okay, ओके ओके। and if we transform into a different variable, we would have like this. नो आई थिंक इट विल बी कन्वीनियंट टू मेक सेपरेटली, नहीं Yeah, तो it would be कुछ better if प्रॉब्लम we ही हो have सकता है। separate. या So this is it. ठीक It's है। just we need to import the data, and then we need to define the variable in the variable view, and then accordingly we can go to the data view and analyze the data. हाँ। We can compare the means. We have different, भाई यहाँ से तो वो भी कर सकते हैं ना, बाइवेरिएट कोरिलेशन, कोरिलेशन we can do कोफिशिएंट। bivariate correlation as well between two variables. We can do that.
तो ठीक मयूर है। आई गेस, हाँ या दिस इज इट राइट। हाँ बस रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, हो गया। हम्म। अब हाउ डू आई स्टॉप दिस, स्टॉप, मोर स्टॉप मोर पे रिकॉर्डिंग। यू हैव टू गो टू मोर ऑप्शन। हाँ, ये स्क्रीन, द स्क्रीन इज वहां पे विजिबल राइट। देख ऊपर देख, हाँ जहाँ पे ये वो ये एरो है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं ना, स्टॉप। हाँ हाँ